हेलो एंड नमस्ते। मैं हूं अनुष्का चांडक, आपकी कथक की इंस्ट्रक्टर, एंड वेलकम बैक टू अनदर कथक वीडियो। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। एक बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में है, हाउ टू टेल कथक एंड सेमी क्लासिकल डांस अपार्ट। And since there are a lot of intricacies involved in it, we are going to break it down further. But before we get into that, एक अनाउंसमेंट भी है और एक शिकायत भी है मेरी आप लोगों से। अ लॉट ऑफ यू इंट्रोड्यूस योरसेल्व्स टू मी एज माय स्टूडेंट्स, but going by the basic logic of what a student teacher relationship is, I should have at least seen my student dance in front of my eyes, and the student should be trained under me for a decent amount of time for them to call themselves as my students or me to claim that I am your teacher, right? लेकिन अगर आप डांस वीडियोस और ट्यूटोरियल्स देखकर ये समझ रहे हैं कि आप सीख रहे हैं, तो लेट मी क्लियर अ कॉमन मिथ। परफॉर्मिंग आर्ट इज़ अ वेरी लाइव टाइम आर्ट फॉर्म। उसके लिए आपको इन पर्सन आपके टीचर से मिलना, बात करना, सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Just like how I watch an Amir Khan movie and do not claim that he is my friend, you cannot claim to just watch a video of Kathak and then claim that you are learning Kathak or that you're my student. And further pulling that thread, if you really seriously want to learn or train yourselves in classical or semi classical dance forms, you can join our online classes, for which you can message us on the WhatsApp number given below. I hope to see you very, very soon, and I'm really hoping that you take this up seriously. Now, jumping into the core topic of today's video, I'm going to give you a very simple analogy. Okay? आप जब क्लासिकल या सेमी क्लासिकल डांस फॉर्म्स देखते हैं तो उसमें कई सारे एलिमेंट्स होते हैं। मूवमेंट्स होती है जिसको हम कथक की लैंग्वेज में कहेंगे अलग अलग हस्तक, चक्कर हो सकती है, फुटवर्क या तत्कार हो सकता है, राइट? दीज आर लाइक अल्फाबेट्स ऑफ अ लैंग्वेज। अब इस एनालॉजी के लिए ले लेंगे इंग्लिश अल्फाबेट्स ए टू जेड। ओके, उसमें से मैं कुछ रैंडम अल्फाबेट्स अगर पिक करती हूँ और उनके साथ शब्द या सेंटेंस बनाने की कोशिश करती हूँ। लेट्स से मैंने ले लिया MAIN मैं, SUNDAR सुंदर, HU हूँ, मैं सुंदर हूँ, या TUM तुम सुंदर हो, all of it with English alphabet. Does that mean I'm speaking in English? क्या ये सेंटेंस इंग्लिश भाषा का है? No. Why? Because what it misses is the vocabulary and the grammar of English language. सिर्फ अल्फाबेट से इंग्लिश लैंग्वेज नहीं बनती है, उसकी अपनी एक वोकैबुलरी या शब्दकोश होता है और व्याकरण ग्रामर होता है। लेकिन अगर मैं ग्रामर हिंदी का यूज कर रही हूँ तो नाउ वेयर डू आई प्लेस दिस? इट्स इन द मिडल, राइट? क्योंकि मैं अल्फाबेट हिंदी का यूज नहीं कर रही हूँ। दिस इन बिटवीन प्लेस would be called semi classical, जहाँ पर इंस्पिरेशन किसी एक भाषा की है, ग्रामर वोकैबुलरी दूसरी भाषा की है, and then somewhere in the middle the two of them meet. So let's say you've taken the movements from Kathak, not the grammar and vocabulary, because it's coming from a certain context. ये एक बहुत ही पुराना डांस फॉर्म है, it has certain origins, it has a culture of its own. लेकिन all of that aside, I've only taken the alphabet from Kathak, and then I'm choosing maybe the vocabulary and grammar of some popular Bollywood song, let's say, and then I put them together. That would be called semi-classical, where you can say it is inspired by a certain classical dance form but is not the classical dance form itself. Now let's go into how to identify Kathak. The first thing and the easiest thing that comes to my mind is the repertoire, okay, which is generally or traditionally Vandana, Tal, Abhinay for a solo dancer, or even if it's for a group performance, you can more or less follow the same sequence. Now, for all of this comes into play vocabulary and grammar. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बोल है जो है ता थे रत थे या थे रत थे रे ता थे,
and so on. This would be the vocabulary of an आमद. उस composition का नाम है आमद. As for the grammar, its placement also matters. ये जो पूरा बड़ा सारा ऐसे है जो कथक का है, उसमें उस सेंटेंस का प्लेसमेंट सही से होना चाहिए, उस शब्द का भी प्लेसमेंट सही से होना चाहिए, which is a grammar rule, right? So it should ideally be placed at the start of the tal. Why? Because it has a certain purpose attached to it as well. The composition and the name of the composition holds a certain meaning, which means the entry of a dancer. And the purpose is for the dancer to open up and warm up their body and the stage, and also the audience for the tal that is going to unfold ahead. Another thing to identify Kathak would be the characteristics of Kathak, but also in terms of the correct usage of all of these elements. For example, let's take a palta. आप दोनों साइड्स में इस मूवमेंट को लेकर अलट पलट कर घूम रहे हैं, right? I'm sure you have seen this movement a lot of times being performed on semi-classical or popular tunes as well, right? Bollywood music, basically. And this movement can come in anywhere डिपेंडिंग ऑन द म्यूजिकलिटी. जहाँ पर उस तरह के बीट्स है, उस तरह का म्यूजिक है, वहाँ पर वो मूवमेंट आ जाएगी. बट व्हेन इट कम्स टू कथक, देर आर सर्टेन गाइडलाइंस attached to where this movement should be used. And not only does it imply in case of paltas, but also for every other movement, chakkars, tatkars, your stances, postures, अभिनय, एवरीवेयर. अगर पलटे की बात करें तो वो गत निकास में आना ही आना चाहिए, बिकॉज दैट इज द स्टार्ट ऑफ गत निकास, जिसके बाद आप एक चाल करेंगे एक पॉस्चर को लेकर, और एब्सोल्युटली हैज टू कम इन गत भाव, because whenever there is a change of time, character, location, this palta or this movement is used as an instrument to indicate that change. Hence, again, it does not merely stay a movement, it becomes an instrument, a tool, because it has a very specific purpose attached to it. Again, same goes for everything else from tatkar, chakkars, other movements, and other hastaks. The third and the easiest way is to identify the soundscape for Kathak. Now, we have a very bad habit of equating music to song, right? But it can't be as simple as that. Music overall can have different kinds of compositions. It can entail a lot of genres of music as well. Here, in this case, when it comes to Kathak, we are going to refer to Indian classical music, जिसे हम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के नाम से जानते हैं, which also means, and it is a blatant statement, कथक गानों पर नहीं किया जा सकता है. It needs to have the base of a certain structure of compositions, whether it is percussion or melody. अगर हम percussion में चले जाए तो जो compositions तबला या पखावज पर बजाई जाती है वो जनरली कथक की compositions हो सकती है. धागतिट तागतिट किढ़ातिट धागतिट गदी गद नागतिट, इस तरह की जो कॉम्पोजिशन है जो पखावज के बोलों से आती है वो कथक का परन बन जाती है. या फिर अगर आप कोई स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट ले ले, वोकल्स ले ले, तारे दानी दीम तनुम तदेरे ना, इसको कहते हैं तराना. अगेन अ बेस फॉर कथक. व्हेन यू गो इनटू अभिनय एज वेल, देयर आर compositions that entail certain themes that can be very well represented in Kathak. वो हो सकती है ठुमरिया, गजल्स, इवन ध्रुपद, भजन, इस तरह की कॉम्पोजिशंस जो सबसे बेहतरीन, सबसे पहले तो क्लासिकल म्यूजिक, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में गाई जाए. दूसरा, जिसकी इंटरप्रिटेटिव वैल्यू कथक के टर्म्स में ज़्यादा हो. अगेन, putting all of this in a nutshell, क्या कथक गानों पर किया जा सकता है? Straight answer is no. It is not as plain as or as simple as that. And now the question remains, is semi-classical then valid at all?
आई वुड से व्हाई नॉट. आज भी कॉन्वर्सेशनल लैंग्वेज जो है हमारी, उसमें हम टर्म यूज करेंगे हिंग्लिश. हम बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बात नहीं करते, पर पूरी तरह से अंग्रेजी या इंग्लिश में भी बात नहीं करते हैं. So somewhere it's come in between, which makes it convenient for a smooth conversation between two people, which today we will term as Hinglish, right? Similarly, when you do not have the time, effort, energy to dedicate into understanding the world of classical dance or Kathak in this matter, but you are also equally fascinated by the way it looks, the movement it has, but you want to sway to the songs and the music that you already know of, you'd probably opt for semi classical, which is also a very good, very valid choice. And that was all from me today. I hope you found this helpful. I hope this answers your questions. If you are further curious about it, if you want to learn it or take dance seriously, please message on the WhatsApp number given below to join our online semi classical and Kathak classes. I'm going to see you in the class very, very soon. Until then, keep dancing. Have a great day.